Hi guys. Hi guys. Good evening. Right now it's about 7 minutes past 7 p.m. and today is 21st of October 2021. I'm your host Dr. Seema Jain. I'm a PhD in physics from IIT Delhi. I'm a SEBI registered research analyst. And definitely, as it says here, I love applying physics and math in stock market and thrilled to see the results. I'm chief mentor and founder at StockPro and partner with Zerodha Upstocks Wise and Asta Trade. So, guys, hope you had a wonderful trading session today. We have given about 4 or 5 stocks to our students. We have given AU Bank for a buy. We have given Kotak Bank for a buy. We have given SR Trustfund for a buy, and we have given SRF for buy. These are 4 stocks that we have given, and all of them moved flawlessly after the levels were broken. So, before I go on anywhere, I would like to show you this is how a channel that I have drawn yesterday, right? Look at how beautifully Nifty has taken support from the same bottom of this channel, right? Exactly from the channel, it just breached it a little bit, and then from there, actually, I should have made it little here, right here, like this, right? Then all the points will be covered, and if you see just when the all bottoms are touching, it exactly from the same, like from the channel, it bounced back, right? So this is how wonderfully the trend lines work. This is how beautifully you will get the beautiful trades, and very nice trades you will get when you will see a bounce coming from this level, and you can make your time frame as 5 minutes also, right? You can trade in 5 minutes also, and a beautiful reversal trade, from here. If you see from 180682 to 18226, almost like 130-40 points का movement आया था from this level, right? So अब हम बात करते हैं कि what happened in बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं. तो बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस आया था टुवर्ड्स द एंड. लेट्स सी बैंक निफ्टी में एक और भी ज्यादा जबरदस्त ब्रेकआउट आया था, राइट? Look at how Bank Nifty broke this range. How powerfully Bank Nifty broke the range. Power is determined. Like, look at this power of these candles. These are very powerful candles, right? So today, how it broke the today's high was actually very significant, right? With a solid candle, right? फर्स्ट कैंडल का हाई जब ब्रेक हुआ तो ये सॉलिड कैंडल बनी, एंड these are important indications, and it simply meant that the market is going to go up non-stop, right? From 39,772 it went up to 40,200, right? Almost like 450 points movement came into Bank Nifty. Now, आज का अगर हम मार्केट देखते हैं तो किस किस स्टॉक ने मार्केट को एक मूव दिया, एक ब्यूटीफुल मूव सुबह से ही आता हुआ दिखाई दिया है हमको कोटक महिंद्रा बैंक में, राइट? जैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रीवियस बैरियर को क्रॉस किया है, ये एक सिंगल डायरेक्शन में ही चला है. फिर उसके बाद टाटा मोटर्स, आरबीएल बैंक. सो आप देखेंगे दो सेक्टर्स खास तौर से बहुत अच्छे से चले हैं. एक तो बैंकिंग सेक्टर, सो कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, पीएनबी, right? And Federal Bank. Then you have 𝐾𝐚𝐕𝐄, IDFC First Bank. Then you have AU Bank. Then you have HDFC Bank. Then you have CUB. You have ICICI Bank, right? All of them had a beautiful breakout. और एक और जो सेगमेंट मुझे चलता हुआ दिख रहा था वो था हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, राइट? M&M Fin, like finance sector basically, so M&M Fin, SR Transfin, then we had here Chola Fin, here is Chola Fin, and then we saw all these, like Canfin Home, then you can see Mannapuram, right? All these are basically finance sector, finance, IBUL Housing Finance, LIC Housing Finance. So housing finance and finance sector basically moved beautifully, right? So अब कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कल आज जैसे निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन को डिफेंड किया है, इट शोज
and it is actually been the movement has been led by बैंक निफ्टी। मैंने कल भी आपको बोला था कि कौन किसको ऊपर लेके जाता है, तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को ऊपर लेके गया है, राइट। बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को ऊपर लेके गया है। और जहां तक निफ्टी की बात करें, Nifty was very bearish, more bearish than Bank Nifty. But the way breakout came in Bank Nifty and banking stocks, it lifted even Nifty. So अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, क्योंकि आज की जो ऑप्शन चेन है वो तो एक्सपायर हो चुकी है। तो मैंने 28 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ की मैंने एक्सपायरी लगा रखी है। और अगर आप उसमें नोटिस करते हो तो हाईएस्ट कॉल एडिशन कहाँ पे हुआ है, राइट। 8,000 18,200 पे ही आज 61,000 कॉल्स लिखे गए हैं। और अगर हम पुट राइटिंग की बात करते हैं तो वो भी इसी लेवल पे सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको ये पता है कि ये अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो रही हो, तो इससे क्या अंदाजा लगाना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जो इन द मनी कॉल और इन द मनी पुट है उसमें हैवी राइटिंग हो रही है, तो कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट से, 1 एंड 2, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये कॉल और पुट राइट किए। सो माय क्वेश्चन इज, what do you understand when the same strike price call and put has the highest rating? What do you understand about market tomorrow? One point, and second point I want to ask you, who are these people who are writing these same strike prices, right? Who are they called? What are they? So as far as Nifty is concerned, it tomorrow both the strike prices have heavy writing. So let's see what is happening in the bank Nifty. I'm not telling you what can be inferred, right? इससे आप क्या अंदाजा लगाते हो कल के लिए, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, right? And I will answer in tomorrow's video, or whenever I make, I will definitely answer, and that way you will also be able to understand and learn something new. अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि आज का तो छोड़ देते हैं, आज तो एक्सपायर हो गया। अब हम अगले हफ्ते का देख लेते हैं कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी में क्या हो रहा है, राइट। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो आपको सीधा दिख जाएगा कि यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग हुई है, राइट। 40,000 पे पुट राइटिंग हुई है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे नहीं जाने वाला, एटलीस्ट टुमारो नहीं जाने वाला, right? There is huge call writing as well, but above, on top, you will see less call writing happening, right? So whereas even if I see at the downside, even put writing is also lesser, right? But अगर हम बैंक निफ्टी के components की बात करते हैं, right? बैंक निफ्टी के components की बात करते हैं, मतलब कि किस किस component से किस किस बैंकिंग स्टॉक से बैंक निफ्टी बना हुआ है। अगर हम उनकी बात करते हैं तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, राइट। जैसे आप देखो, मैं अभी देख रही थी SBIN, right? SBIN is looking so very positive, right? State Bank of India. Look at how the reversal has come from the lower levels, right? और I will show you कि small time frame में क्या हुआ है। और जो आप ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है आज की, उसके बाद ये नीचे आया एंड सपोर्ट लेके वापस रिटर्न किया है इसने। ये जो आप तीन कैंडल्स देख रहे हो, इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री हुई है। और कल हम क्या कर सकते हैं, अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, 508 को ब्रेक करता है SBIN, वी हैव अ ब्यूटीफुल एंट्री इनटू SBIN टुमारो, राइट। तो ये एक कंपोनेंट है जो कि बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है, एंड इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। इसी तरह एक ICICI बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह एक ICICI बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। लुक एट हाउ इट हैज गिवन अ क्लोजिंग, अ वेरी वेरी पावरफुल क्लोजिंग, राइट। ये क्लोजिंग इसको बोलते हैं एक पावरफुल क्लोजिंग, बिकॉज इट हैज ब्रोकन ऑल इट्स बैरियर्स, राइट। अपने सारे बैरियर्स को ब्रेक किया है, राइट। अब 15 मिनट में एक बार फिर से देखते हैं। तो 15 मिनट में एक्चुअली एक डिफरेंट पिक्चर देता है ये, और वन डे में थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर देता है, राइट। तो इसने जो क्लोजिंग दी है 757, बट आई डोंट नो 15 मिनट में तो ये कुछ और दिखा रहा है और वन डे में कुछ और दिखा रहा है।
वन डे में क्लोजिंग थोड़ा हाई से नीचे की तरफ दिखा रहा है, बट अगर अगेन जो आज इसका मूव आया है आईसीआईसीआई बैंक का, दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग। हम इसमें एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं? 760 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है कल, तो हमारी एक इसमें बहुत खूबसूरत एंट्री बनेगी। इसी तरह एक और बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है, वो है एच डी एफ सी, राइट? एच डी एफ सी बहुत अच्छा लग रहा है। In fact, both twins are HDFC and HDFC Bank. Both of them are looking good. And आज का क्लोजिंग अगेन इज अ वेरी वेरी गुड क्लोजिंग। अब हम एंट्री कहाँ पे लेंगे इसमें? अभी इसने क्लोजिंग दिया 2844 पे, हम 2864 के ऊपर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, राइट? और मे बी इफ यू रियली वांट टू बी सेफ, ये जो प्रीवियस हाई लगाया है यहाँ पे, यू कैन सी ये जो प्रीवियस हाई लगाया है, अगर इसको ब्रेक करता है बैंक एच डी एफ सी 2875, then it will be a very decisive move, right? You will get a very very decisive move after that. ओके, तो ये 3 स्टॉक्स हो गए बैंकिंग सेक्टर के। एक और स्टॉक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है इंडिगो, राइट? इंडिगो इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड आफ्टर फॉलिंग डाउन फॉर सो मेनी डेज, 1 2 3 4 5 6 डेज गिरने के बाद आज इसमें लोअर लेवल से एक जबरदस्त रिवर्सल हुआ है, राइट? तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? तो अब एज आई टोल्ड यू कि कल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है बैंक निफ्टी से। सो बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी आफ्टर 40,100 के बैरियर को क्रॉस कर लेती है, राइट, नेक्स्ट बैरियर इज गोइंग टू बी 40,500, राइट? सो बहुत सिंपल सा है, बैंक निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त बेस बनाया है 40,000 पे, बट ऊपर की तरफ कॉल साइड में एक रेजिस्टेंस है जो कि 40,100 का है। इफ दैट बैरियर क्रॉसेस, बैंक निफ्टी में टच 40,500, राइट? तो 4 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, 3 उसमें से बैंकिंग सेक्टर के हैं, एक मैं आपको फाइनेंस सेक्टर से भी दे देती हूँ, और वो है चोलाफिन, राइट? चोलाफिन इज लुकिंग वेरी गुड टू मी। इनफैक्ट मनापुरम भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप देखते हो आज एक्चुअली आई वाज रियली रियली टेम्प्टेड टू ट्रेड इन मनापुरम, बट मनापुरम हमको कहाँ लेना है? 202.5 के ऊपर लेना है, और चोलाफिन हमको कहाँ पे लेना है? तो ये सारे 5 6 7 स्टॉक, राधर मुझे मार्केट फिर से बहुत पॉजिटिव लगने लगी है। आज की जो रिकवरी आई है ना, उसने मार्केट को एक डिफरेंट डायमेंशन दे दी है, और मार्केट उससे एक पॉजिटिव नोट में फिर से आ गया है। तो 621 के ऊपर जो है निफ्टी, अगर चोलाफिन जाता है, आप इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 633 फॉर श्योर। और अगर 633 क्रॉस होता है देन 650 इज गॉन नोवेयर, राइट? तो ये मेरे चोला तो मैंने आपको कई सारे स्टॉक्स दिए हैं। लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। सो जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं वो है इंडिगो, SBIN, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, चोलाफिन एंड मनापुरम फाइनेंस, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स जो है मेरे रडार पे है, और लेट्स सी क्या होता है टुमारो। और अगर आप इसमें देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर इज डोमिनेटिंग, राइट? तो इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कल एक बैंक निफ्टी में तेजी की संभावना है। और कहाँ तक जा सकती है बैंक निफ्टी? 40,500 तक इसमें एक डायरेक्ट मूव आएगा द मोमेंट इट क्रॉसेस 40,100, राइट? सो ये मेरा प्रिडिक्शन है। प्लीज डोंट ट्रेड ब्लाइंडली, just go through your risk and reward and go through all your pros and cons and how much risk you can take, how much with respect to the reward, and join me in the live trading, right? Right? And we will be having our live trading session from 9:30 to 10:30 a.m. And along with me, I'll be accompanied by Pankaj and Roshan. And please join. Today we traded in Kotak Bank. I gave the stock right early in the morning. Then we traded into AU Bank. We traded in SRF, and we traded into SR Transfer. All of the trades have given a bang on move, and join free, right? This live trading session is absolutely free. I'll be selecting stocks in front of you, and I'll be telling you the kind of accurate work we do, right? If you have traded along with Stock Pro today or any other day, please write it in the comment box. कल बहुत दिनों बाद, yesterday we had a loss in 1 or 2 calls because market was very volatile.
So today we had a very nice talk. We gave Kotak Bank right in the morning and AU Bank in the morning, and both were amazing calls. So I think this is all what I wanted to share with you. But remain connected and trade along with me on Twitter, on YouTube, on Telegram, wherever you want to be connected with us. Do that and surely join us tomorrow in the live session and make money, right guys? The only underlying idea about conducting these training sessions is to so that you all understand the kind of work we do, the kind of accuracy we have, and how we should really learn about the stock market and make money every single day. So with this, I'm signing off. Hope to see you tomorrow in the live trading. With this, all the best. Bye bye, take care. And if you have made money, please get your friends who are losing money in the stock market to trade along with Stock Pros team. Bye bye, take care.